अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने 50 तक किए थे, आगे देखते हैं आज। ट्रंकेट कमांड रिस्पॉन्स टाइम इज डैश एज कम्पेयर टू डिलीट कमांड। ट्रंकेट कमांड का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो डिलीट कमांड के मुकाबले में क्या है? पुअर है, सेम है, बेटर है या फिर वर्स्ट है? ट्रंकेट कमांड रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे चेक करते हैं। ट्रंकेट है। ट्रंकेट कमांड रिस्पॉन्स टाइम इज डैश एज कम्पेयर टू। तो ये देख लेते हैं हम लोग। ट्रंकेट कमांड का जो रिस्पॉन्स, ट्रंकेट कमांड इज
faster than the delete command. Truncate remove all the rows from a table and the operation cannot be rolled back. Truncate is faster and doesn't use as much window space as delete. Truncate table on every large table can take long time. For example, the execution of the command can take more than 1 hour. To use delete, you need delete permission on the table. To use truncate on a table, you need at least alter permission on the table. So ये faster होता है truncate command. Yeah, with the truncate command response time is better as compared to the delete command. Function in SQL return a single value true. 52. So in 63, in the given SQL statement from prompt error, select star from रिलेशन वन की एक टेबल का नाम, उसमें से वो कहता है सारे के सारे रोज को जो है फैच करके लेके आओ. तो वो कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर बताओ कि एरर क्या है यहाँ पे. तो यहाँ पे एरर वो कह रहा है जो लगा हुआ है हमारे पास जवाब, उसके मुताबिक कह रहा है एरर बताओ. एरर इसके अंदर जो है वो देखने में तो कोई फाइंड आउट नहीं हो रहा. पैरामीटर एरर है, टाइम आउट और एरर है, लॉजिकल एरर है या नो एरर है. इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं. उसके अलावा यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, गूगल में भी. गूगल क्या कहता है इसके बारे में. the given SQL statement select star will prompt an error if a relation 1 does not exist in the database. The error would typically be logical error as it pertains to the query logic rather than a parameter error or timeout error. So the correct answer is logical error. वो क्या था, SQL statement is a parameter error. Here are some of other SQL errors. SQL logical error. This error occurs when the local database is corrupted. To fix this, you can stop the deep security agent services. Required output parameter error. This error occurs when the specified output structure does not match the attributes being selected. So यहाँ पे इसका होगा लॉजिकली और पैरामीटर. गूगल के मुताबिक जो सही ऑप्शन है वो है पैरामीटर एरर. ये पैरामीटर एरर. पैरामीटर एरर कैसे है, एक मिनट तक दोबारा से MCQs को विजिट करते हैं, देखते हैं. यहाँ पे पैरामीटर एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है. लॉजिकल एरर की पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जिस्ट ही ना करता हूँ. अब नो एरर है, हम नो एरर के साथ चलते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग SQL, मैं इसको कहता हूँ जरा ये डिफाइन करें ना. डिफाइन ईच ऑप्शन. लिखा हुआ लॉजिकल एरर. दिस रेफर्स टू एन एरर इन the logic of the SQL query itself. It occurs when the query is syntactically correct but does not produce the desired result due to the incorrect logic or invalid assumptions. Syntax तो ठीक है लेकिन result नहीं मिल रहा ठीक. No error. This means no error in the SQL command. Parameter error. This type of error occurs when there is a problem with the parameters provided to the SQL statement. It could include issues such as passing incorrect data types or providing invalid parameter values. यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास ही नहीं की उसको, पहली बात तो पैरामीटर एरर नहीं होगा. टाइम आउट एरर. दिस एरर अकर व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द SQL स्टेटमेंट टेक्स longer than the predefined time out period. It typically happens when the database server cannot complete the query within the specified time limit, often due to the resource constraint or insufficient query execution plans. In the context of the SQL select star does not, if relation 1 does not exist in the database, it would result in a logical error because the SQL query is syntactically correct but the reference table does not exist. आगे बात समझ अब आपको अच्छी तरह से. यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर पूरा हमने पास नहीं किया उसको, पैरामीटर मतलब कि पास ही नहीं, इसके अंदर पैरामीटर का सीन ही नहीं है, तो ये पैरामीटर वाला तो हवाल ही हो गया पीछे. टाइम आउट वाला, टाइम आउट भी खत्म. ये दो रहे नॉन लॉजिकल और लॉजिकल. लॉजिकल या नॉन एरर. नॉन एरर तो सीन ही उसने एरर है तो पूछे ना, तो वो लॉजिकल एरर बनता है क्योंकि पॉसिबिलिटी के रिलेशन और एग्जिस्ट नहीं करता हो. रिलेशन वन जो टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता. ईच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द
to the data and to the database. क्या कौन से which statement are used to control the access to the data and database को की access को कंट्रोल करने के लिए कौन से दो स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं? ग्रांट और रिवोक दोनों की जाती हैं, बोथ ग्रांट एंड रिवोक। राइट ऑप्शन सी मार्क हुआ है। आगे 55 टाइप्स टाइप्स ऑफ कैचिंग आर कॉमनली यूज्ड इन द पर्सनल कंप्यूटर्स। कैचिंग यहाँ पे देखते हैं CACHE कैचिंग। आगे कैचिंग यहाँ पे the two types of catching are commonly used in the personal computers, memory catching and disk catching। दो कैचिंग इस्तेमाल होती है पर्सनल कंप्यूटर में, मेमोरी कैचिंग और डिस्क कैचिंग। ठीक हो गया, टू सही लगा हुआ है, राइट ऑप्शन टू है। टू टाइप्स ऑफ कैचिंग आर यूज्ड, मेमोरी कैचिंग और डिस्क कैचिंग। आगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर एडिंग ए न्यू कॉलम इनटू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर क्योंकि कॉलम ऐड कर रहे हैं तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर अल्टर, फिर कॉलम, कॉलम टाइप और उसका साइज। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, क्योंकि न्यू ऐड कर रहे हैं तो अल्टर का कमांड नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा बी वाला ऑप्शन। क्योंकि यहाँ देखें अल्टर कॉलम, यहाँ पे कॉलम को चेंज कर रहा है वो, ना कि ऐड कर रहा है, यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, ऐड कॉलम, कॉलम टाइप और साइज। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है बी 56 का। फिर भी एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। सही, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा आगे आता है, ग्रांट इज अ डैश कमांड। कौन सी कमांड है? ग्रांट, ग्रांट DCL कमांड है। DCL का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड है कि जिसका काम होता है कि ग्रांट के एक्सेस को एक्सेस देना या छीन देना। DCL जो लैंग्वेज का काम है। कंसीडर द टू रिलेशन, 58 नंबर क्वेश्चन है। कंसीडर टू रिलेशन सप्लायर एंड सप्लाई, दो रिलेशन है। सप्लायर जो टेबल है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। और सप्लाई जो आइटम की जाए उसका सप्लायर नंबर, सप्लाई नंबर, आइटम नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स अ लिस्ट ऑफ सप्लायर नेम्स सप्लाइंग द आइटम विद आइटम नंबर 555। वो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सप्लायर नेम्स दे, सप्लाइंग द आइटम विद item number 555। select name from, select supplier names as names from supplier where item number is equal to 555। so ये राइट है इसका।
select name as name from supplier, supply where supplier where supplier dot s number is equal to supplier dot s number and item number is equal to 555. इसका जो बनता है वो बी बनता है. Select star s name from the supplier comma supply where supplier s dot s number is equal to supplier dot s and item number is equal to 555. Question number 59. Which of the following is not a DDL command? DDL command को data definition command. Create DB database, create table ये भी है, drop या delete ये नहीं है. तो DDL command यहाँ पे चेक कर लेते हैं. DDL command DDL transforming entities into table, transforming attributes into column. यहाँ पे DDL it deals with the structure of the database. The DDL data definition language allows specification of not only a set of relations but also the following information for each relation: schema for the relation, for each relation, domain of values associated with each attribute, domain of values associated with each attribute, set of indices for each relation, security and authorization information, physical storage structure on the disk. For यहाँ 3 different commands of DDL. Create एक create की command है, दूसरी इसकी ये क्रिएट की आ गई, उसके बाद है क्रिएट टेबल. अब क्रिएट कमांड के अंदर क्रिएट टेबल है शायद एक डेटा टाइप्स एक और तो ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि हमारा. यहाँ पे देखते हैं, ये रहा. Following the 3 different commands of DDL. First, create. The first data management step in any database or project is to create the database. This task can range from the elementary to the complicated, depending on your needs and the database management system you have chosen. Many modern systems, including Personal Oracle 7, include the graphical tools that enable you to completely build the database with the click of a mouse button. This time-saving feature is certainly helpful, but you should understand the SQL statements that execute in response to the mouse clicks. This command is used to create a new database table. The table is created in the current default database. The name of the table must be unique to the database. The name of the table must be unique to the database. The name must begin with a letter and can be followed by any combination of alphanumeric characters. The name is allowed to contain the underscore character. This command can be used. The name is allowed to contain the underscore character. This command can be used to create the permanent disk-based or temporary in-memory database tables. Data stored in a temporary table is lost when the server is shut down. To create a temporary table, the asTemp attribute must be specified. asTemp
attribute must be specified. Note that querying against a temporary in-memory table is generally faster than querying against a disk-based table. This command is non-transactional. If no file size is given for a disk-based table, the table will be pre-allocated to 1 MB. If no file growth is given, the default is 15%. It is used to create new tables, fields, create tables, fields, views, and indices. It is used to create database. The format of the statement is as under: create database, database name. For example, create database exam. So now in this example, database of exam has been created. Next step is to create the tables. There are two approaches for creating the tables, which are through the SQL create command, through the enterprise manager. ठीक है, टेबल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो SQL कमांड के जरिए है और दूसरा जो एंटरप्राइज मैनेजर के जरिए है. Create table command is used to create a table first. Create a table और दूसरा जो है वो define attributes of the table with the data type. Create a table. अगर हम लोग create की कमांड यूज SQL create कमांड का इस्तेमाल करते हैं टेबल बनाने, क्या होगा कि टेबल बनेगी. create table command is used to create a table first and define attributes of the table. Attributes यानी कि उसकी हर कॉलम, attribute समझ रहे हैं, कॉलम है, different attributes यानी different columns of the table with data types. ठीक हो गया. डाटा टाइप्स के साथ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे टेबल के अंदर. और तीसरा जो डिफाइन डिफरेंट कंस्ट्रेंट ऑन एट्रीब्यूट्स. कंस्ट्रेंट्स का मतलब है क्या है कि रेंजेस डिफरेंट, ठीक, वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. डिफाइन डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स लाइक प्राइमरी एंड फॉरिन कीज, चेक कंस्ट्रेंट्स, नॉट नल, डिफॉल्ट वैल्यू एसेट्रा. ठीक है, ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं. आगे द फॉर्मेट ऑफ क्रिएट टेबल कमांड इज एज अंडर. क्रिएट टेबल की कमांड कह रहा है अंडर, नीचे लिखी हुई है क्रिएट टेबल लिख के फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना डाटाबेस नेम. डाटाबेस का नेम लिखने के बाद अंदर लिखना ऑनर. ये बंद हो गया यहाँ पे. उसके बाद फिर डॉट, फिर पाइप, फिर ऑनर. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे देखने में, लेकिन आपने इसको ध्यान से देखना है. पहले डाटा क्रिएट लिख के क्रिएट टेबल, उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाटाबेस का नाम आएगा, उसका ओनर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से आएगा, और डॉट पाइप लगा के फिर आपने डॉट ओनर लिखना है राइट. और ये बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट को हमने, एक स्क्वायर ब्रैकेट अंदर एक बाहर है. अब यहाँ पे टेबल नेम आएगा जो टेबल हमने बनाना है. उसके बाद आता है ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट जो होती है उसकी नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर पहले नॉर्मल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद आता है ये एरो जिसका मुंह जो है वो लेस देन का साइन आएगा. उसके बाद कॉलम डेफिनेशन एंगल ब्रैकेट के अंदर, इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं. आगे पाइप, फिर कॉलम नेम, कॉलम डेफिनेशन आ गई, यहाँ पे कॉलम नेम आ गया, एज ओमिटेड कॉलम एक्सप्रेशन आ गया. फिर उसके बाद आगे दोबारा से पाइप, फिर टेबल कंस्ट्रेंट, फिर ब्रैकेट बंद कर ली ब्रैकेट जो थी. अब आगे पाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, प्राइमरी की, पाइप, यूनिक, कर्ली ब्रेसेस बंद. उसके बाद आगे आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, डॉट 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 एन, कर्ली ब्रेसेस बंद. Let's now consider the create statement used to create the airport table definition for the airline database. ओके यार, क्या हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एयरपोर्ट. ठीक है, ये एयरपोर्ट के नाम से एक टेबल बनेगा, डेफिनेशन फॉर द एयरलाइन. और डाटाबेस पहले वो कहता है डाटाबेस बना ली हमने, डाटाबेस का नाम है एयरलाइन. अब उस एयरलाइन के अंदर एक टेबल बनना है एयरपोर्ट के नाम से. अब ये यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल की कमांड लिख के एयरपोर्ट क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम आ गया एयरपोर्ट. आगे हम लोगों ने एयरपोर्ट
उसके डिफरेंट वो जो होते हैं एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए कि एयरपोर्ट 4 एयरपोर्ट करेक्टर 4 नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है, 4 उसकी डाटा टाइप है एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट एट्रीब्यूट है, 4 उसकी डाटा टाइप है और 4 जो है उसकी हम लोगों ने साइज बता दी कि 4 कैरेक्टर्स तक लिखना है। नॉट नल के नल ना हो यानी 0 ना हो। नेम एयरपोर्ट का नाम आएगा पहले। नेम एक एट्रीब्यूट है वर 4 इसकी डाटा टाइप है 20। आगे चेक इन वार 4 50 चेक इन कंस्ट्रेंट है। आगे रिजर्व टिकट्स या सीट्स जो भी है उसकी डाटा टाइप है वार 4 12 कॉमा फ्लाइट इन्फो वार 4 12। ठीक हो गया, तो ये बंद होगी कर्ली ब्रेसेस, ये एट्रीब्यूट्स थे। उसके बाद आ गया टेबल नेम एयरपोर्ट द नेम चूजन फॉर अ टेबल मस्ट बी अ वैलिड नेम फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या जो टेबल का नाम आप चूज करेंगे वो वैलिड हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ताकि उसके लिए इजी रहे। फिर अब हम कॉलम के नाम जो है वो यहाँ पे डालते हैं। कॉलम नेम एयरपोर्ट, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद नेम के बाद आता है चेक इन, फिर उसके बाद रिजर्व सी टिकट्स, फिर फ्लाइट इन्फो और ये यहाँ पे खत्म। आगे द नेम्स चूजन फॉर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल मस्ट आल्सो बी वैलिड नेम्स फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया, पहला वर्ड देखिए हम गौर करें तो बड़ा लिखा है हर जगह उसने। अच्छा डाटा टाइप्स ईच कॉलम मस्ट बी allocated an appropriate data type कि हर कॉलम को एक डाटा टाइप असाइन करनी लाजमी है। इन एडिशन की कॉलम उसके अलावा जो की कॉलम है हमारा जिसको हम प्राइमरी कॉलम भी कहते हैं, प्राइमरी की भी कहते हैं, कॉलम्स such as की कॉलम कौन सा है, द कॉलम यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो ऑफ अ गिवन टेबल। टेबल के अंदर किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो की इस्तेमाल करते हैं की कॉलम्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो किसी एक खास रो को निकाल टेबल से, तो हम जो की इस्तेमाल करते हैं वो कॉलम उसको हम कहते हैं की कॉलम। may be specified to be not null. Database management system will then ensure that the column specified as not null always contains a value. The column definition is explained as under. अब यहाँ उसने column की definition explain की है। column definition angle bracket in column definition column underscore definition angle bracket बंद resolution operator फिर equal फिर उसकी बात कर ली ब्रेसेस के अंदर column name and data type। कॉलम डेफिनेशन एंगल ब्रैकेट में देखने इक्वल का साइन डाल के कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉलम नाम, कॉलम के नेम और डाटा टाइप। आगे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एक्सप्रेशन, डिफॉल्ट आगे कंस्ट्रेंट एक्सप्रेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, डिफॉल्ट की कांस्टेंट एक्सप्रेशन डाल दो कि अगर कुछ भी निशान हो तो ये साइन कर दो। आगे पाइप कर्ली ब्रेसेस हैं ये। आगे लिखें कॉलम कंस्ट्रेंट एंगल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी इसको। आगे फिर है द कॉलम कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड एज अंडर कॉलम कंस्ट्रेंट इक्वल कंस्ट्रेंट नेम। ओके आगे आ गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने क्या रखा है कि नॉट स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर नॉट नल पाइप नॉट नल कर्ली ब्रेस बंद और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। आगे दोबारा से पाइप फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट खोली उसके अंदर हमने कर्ली ब्रेस खोली। प्राइमरी की पाइप यूनिक यानी प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। आगे पाइप स्क्वायर ब्रैकेट ओरिजिन की स्क्वायर ब्रैकेट बंद और रेफरेंस रेफ टेबल स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट रेफ कॉलम यहाँ बंद। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिखा ऑन डिलीट कास्केड पाइप नो एक्शन कर्ली ब्रेस बंद बार स्क्वायर ब्रैकेट बंद। स्क्वायर ब्रैकेट खोली लिखा ऑन अपडेट पे कर्ली ब्रेसेस उसके कास्केड पाइप नो एक्शन और कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए पाइप क्लिक
logical expression securely races one और उसके बाद नॉर्मल. We will now see some example of the create command. This is a very simple command for creating a table. Create table program. यहाँ पे create table बनाने के लिए जो create command SQL की इस्तेमाल देखने. create table program table का नाम है. प्रोग्राम में एक नेम एक एट्रीब्यूट है, उसकी डाटा टाइप आ गई और साथ में साइज आ गया. फिर टोटल सेमेस्टर ये प्रोग्राम नेम था, डाटा टाइप 4 है, फिर 4 उसका साइज है. टोटल सेमेस्टर ये जो है उसका एट्रीब्यूट है. टीनी इंट इसका जो है साइज, टीनी इंट इसकी डाटा टाइप साइज नहीं बताया गया. डिफॉल्ट स्टार्ट जो साइज. प्रोग्राम क्रेडिट्स स्मॉल इंट इसकी डाटा टाइप है. इफ दिस कमांड इज to write in the SQL server, it will be written in query analyzer. We will now see an example in which has more attributes comparatively along with different data types. Create table student char student ID with the char data type, student name with the char data type, student father name char data type, student address text, phone number char, parent name char, program name char, current semester small int, CGPA real. In this example, there are more attributes and different data types are also there. We will now see example of creating a table with a few constraints. Create table student. आप constraint apply करेंगे हम यहाँ पे. ये देखिए student ID 4 5 constraint क्या लगाएगा student PK यानी student primary key constraint student CK मतलब check packet std like as square bracket 0 -9 curly brace square brace 0 -9 0 -9 0 -9 1 स्टूडेंट नेम 4 नॉट नल नहीं होना चाहिए. उसके बाद नॉट नल हो यानी कि 0 से नीचे वाली नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट एड्रेस आ गया. स्टूडेंट फादर नेम 4, स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट, स्टूडेंट फोन नंबर 4, पेरेंट नेम 4, करंट सेमेस्टर स्मॉल इंट करंट सेमेस्टर स्मॉल इंट डिफॉल्ट 1 स्मॉल इंट इसकी डाटा टाइप. लेकिन देखो करंट सेमेस्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसको डिफॉल्ट 1 पे सेट कर दो. CGPA रियल. यहाँ पे लिखे every constraint should be given a meaningful name as it can be referred later by its name. The check constraint checks the values for any particular attribute. In this way, different types of constraints can be enforced in any table by create command. Somebody designing a table database properly is extremely important for the success of any application. Today's lecture we have seen create command of SQL, how different constraints are applied on this command with the help of different example is. This is an example command and must be practiced as it is used to create a database in different tables. So create command is part of DDL. Create command is a part of DDL. Create a database of exam and create a table of student with the different constraint in the SQL server. अच्छा जी, खैर तो जो है ये वाला DDL और द DDL कमांड, इसको एक दफा यहाँ से कंफर्म करवा दूँ आपको. क्रिएट और डिलीट भी इसकी कमांड है, लेकिन एक मिनट है. क्रिएट टेबल क्रिएट ये दो तो है. डिलीट और ड्रॉप करनी मुझे आइडिया कौन से इनमें से नहीं है, तो चेक कर लेते हैं. यहाँ से ड्रॉप नहीं है. क्रिएट डेटाबेस क्रिएट टेबल ड्रॉप. दिस इज अ कमांड टू यूज रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस सच एज टेबल्स और डेटाबेसेस. डिलीट नहीं है, ठीक लगाया हुआ उसने. डिलीट इसकी कमांड नहीं है. ड्रॉप भी है. ड्रॉप क्यों डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये रिमूव करने के लिए. अच्छा, नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन सम एक एग्रीगेट फंक्शन है, मैक्सिमम भी एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज भी एग्रीगेट फंक्शन है. अपर जो है वो अपर एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ. एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट, ये देखिए दिस फंक्शंस ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ रोज. ये सेट ऑफ रोज पे इंप्लीमेंट होता है, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. ठीक है, और सिंगल वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस. यहाँ पे नीचे ये दिए हुए एग्रीगेट फंक्शन. एवरेज क्या है, काउंट क्या है, काउंट क्या, स्टार क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है और सम क्या है. ये सारे जो हैं वो हमारे पास
क्या कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कहता है एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे अपर जो है अपर एग्रीगेट फंक्शन इसी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट एंड फ्रॉम। बेसिक पार्ट जो सिलेक्ट या फ्रॉम दोनों है। कंफर्म कर लेते हैं हम लोग एक दफा यहाँ से। हाँ, बहुत सही लगाया हुआ इसने। सिलेक्ट, हाँ, सिलेक्ट एंड फ्रॉम दोनों। डैश operation allows to be used wildcard. The dash operation, the operator allows to use wild cards in the where class of an SQL statement. Jones operator हमें allow करता है wild card in the where class of an SQL statement. Dash operator allows to use wild cards. वेयर क्लास के अंदर हम लोग वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन अलाउ करता है? एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर वेयर क्लास, एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके अंदर वेयर क्लास है। वेयर क्लास के अंदर हमें कौन सा ऑपरेटर जो है वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करने की सहूलत देता है? वो इन है, वो फ्रॉम है, वो इन है, लाइक है या नन है? कोई भी नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं। तो ऑपरेटर लाइक, द लाइक operator is used to search for a specified pattern in a column. Wildcards such as ampersand and minus can be used in the pattern to match zero or more characters or a single character respectively. So the correct statement is C, like. So like जो है इसका right option है। आगे update command belong to which type of classification? अपडेट का जो कमांड है किसके अंदर आता है? डीएमएल के अंदर, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। 64 which power is turned off content when the power is turned off content of dash is lost। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि वो मिट जाती है। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, परमानेंट स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये परमानेंट और नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का सीन है। जो वोलेटाइल होती है वहाँ से स्टोरेज उठ जाती है, लाइट चली जाए तो when the connection is lost और the power is off, कट ऑफ। तो इसका है वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर ये सीन होता है। बी ऑप्शन। 65 which of the following is used with the insert command to insert tables in the database table? Which of the following is used with the insert command to insert the values in a database table? into का हम लोग कमांड इंसर्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। 65 का राइट ऑप्शन है बी। उसमें 66 which of the following is used to filter rows according to the sum conditions? select from, update या work class इस्तेमाल करते हैं। to filter the rows according to the sum condition we use work class। which of the following is the string function in the SQL? count, sqrt, sin, len। इनमें से कौन सा वो कह रहा है स्ट्रिंग फंक्शन है? SQL के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन categories of function, these categories of functions are specific to the SQL server depending on the argument and return value। function are categorized as under mathematical, string, data। तो स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से उसने क्या पूछा हमारे से? which is the string function in SQL? string function हमारे पास कौन कौन सी है? लोअर, अपर, सबस्ट्रिंग और लेन। लोअर, अपर, सबस्ट्रिंग और लेन। लेन जो स्ट्रिंग फंक्शन है। काउंट कौन सा फंक्शन है? काउंट जो मेरे ख्याल से आता है उसमें एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आता है। हाँ, एग्रीगेट के अंदर क्या आता है? काउंट। अच्छा, और दूसरा जो SQRT, सिन किसके अंदर आता है? SQRT सिन मैथमेटिकल में आता है और SQRT स्क्वायर रूट पी ये दोनों मैथमेटिकल हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे मैथमेटिकल में कौन कौन से आते हैं? ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, राउंड, साइन, साइन थीटा, सॉर्ट, SQRT, स्क्वायर रूट, स्ट्रिंग के अंदर लोअर, अपर, सब स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डेट फंक्शन के अंदर डेट डिफरेंस, डेट अपार्ट, डेट पार्ट, गेट डेट, तीन फंक्शन आती है। गेट डेट, डेट पार्ट और डेट डिफरेंस। सिस्टम के अंदर यूजर,
डाटा लेंथ, होस्ट नेम, तीन चीज़ आती है सिस्टम के अंदर, यूज़र, होस्ट नेम और डाटा लेंथ। और कन्वर्जन के अंदर आता है कास्ट और कन्वर्ट। We'll see an example using above mentioned functions. Select upper student name, lower student father name, set address length, convert the char student address from student. In this example, student name will be displayed in uppercase, whereas the father name will be displayed in lowercase. The third function is of getting the length of the student address. It has got nesting of functions. First address is converted into characters, and then its length will be displayed. So len जो है वो string function है. आगे 68 create cache is a portion of memory made of high speed instead of the slower and cheaper that you dash used for memory. Cache is a portion of memory. ये लिखा हुआ है memory cache की दो टाइप्स हैं. वैसे ये two types of caching are commonly used in the personal computer: memory caching and disk caching. memory cache को हम कहते हैं sometimes cache store or RAM. Cache is a portion of memory made of high speed static RAM instead of the slower and cheaper. Cache is a portion of memory that is made up of speed static RAM. Cache is a portion of memory that is a portion of memory. Cache is a portion of memory that is made up of high speed static RAM. High speed static RAM SRAM भी कहा जाता है instead of the slower and cheaper DRAM dynamic RAM used for main memory. ठीक हो गया. तो ये हो गया कैच इज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम से बनी है इंस्टेड ऑफ स्लोअर एंड चीपर. स्लोअर और चीपर जो है वो मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कैश इज अ पोर्शन ऑफ द मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड एस रैम इंस्टेड ऑफ द स्लोअर एंड चीपर डी रैम यूज्ड फॉर मेन मेमोरी. कैश मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं. एस रैम और डी रैम डी का मतलब डायनामिक और एस का मतलब स्टैटिक. बाकी रैम का आपको आइडिया होगा. क्वेश्चन नंबर 69. प्रोग्राम रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट रिक्वायरमेंट created by the user organization are called programs written to perform different requirements. Programs written to perform different requirements Programs written to perform different requirements created by users and organizations are called application programs. Programs written to perform different requirements created by the organization or the users are called application program. अच्छा 17 है general activities which are performed during the development of application program. Editing, displaying, इसका मैंने simple सा formula during the development of application program are. वो कह रही है जो general activities which are performed during the development of dash. MCQs पे थे हम. तो ये किसके अंदर की जाती हैं? ये जनरल एक्टिविटीज जो है किसकी डेवलपमेंट के दौरान किया जाता है. एडिटिंग ये मैंने पढ़ा था इस तरह DED डाटा रिडंडेंसी, एडिटिंग, डिस्प्ले, प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट. PR P के मतलब प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एंड R के मतलब रिपोर्ट. D के मतलब डेवलपमेंट एडिटिंग, डिस्प्ले, डाटा इनपुट,
editing, display, processing related activities और R से report. डेड डेड पर D से data input, E से editing, D से display, P से processing related activities और R से report. एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ये एक्टिविटीज होती हैं, ये मतलब during the development of application program these general activities are performed. 71. The text-based and graphical user interface GUI, most commonly called as forms. Text-based and graphical user interface, most commonly called as forms. Forms हम कहते हैं graphical user GUI को हम forms कहते हैं, text based वाले को नहीं कहते हैं. are two different types of user interface. ठीक हो गया. टेक्स्ट बेस और GUI जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के दूसरे नाम है फॉर्म्स. तो ये दो टाइप्स हैं यूजर इंटरफेस की. राइट ऑप्शन सी लगा हुआ है. 72. फॉर्म्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. होम मैनी हाउ मैनी ये लिखना था, होम मैनी लिखा गया. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर अवेलेबल. 4, 5, 1, 2. टू टाइप्स हैं फॉर्म्स की अवेलेबल. फॉर्म्स यानी एप्लीकेशन फॉर्म्स GUI. फॉर्म मतलब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कितनी टाइप्स हैं उसकी? दो हैं, एक है ब्राउजर बेस्ड और एक नॉन ब्राउजर बेस्ड. नॉन ब्राउजर बेस्ड को सिंपल भी कहा जाता है. दो टाइप्स. डी ऑप्शन. 73. An effective user interface minimizes the dash the user requires to learn and implement the system time. ठीक है, ये इफेक्टिव यूजर इंटरफेस जो है वो मिनिमाइज कर देता है. जैसे व्हाट्सएप को देख लें, जो नया यूजर भी हो तो उसको खुद ब खुद ही पता चलता जाता है ये चीज़ इस तरह होनी है. ठीक है, तो वो किस तरह होता है, वो इंटरफेस के जरिए होता है कि इंटरफेस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि यूजर उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, यूज टू हो जाए और मिनिमम टाइम के अंदर उसको सीख ले. An effective user interface minimizes the time required to learn and implement the system. ठीक है, बी ऑप्शन है इसका. 74. इन वर्टिकल पार्टीशनिंग. इन वर्टिकल पार्टीशनिंग पहले ये समझने वर्टिकल पार्टीशनिंग होती किस तरह से. वर्टिकल पार्टीशनिंग जो होती है वो होती है कॉलम की बेसिस पे, और एक होती है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जो कि रो की बेसिस के ऊपर होती है. हम लोग थे 74 में मेरे यहाँ से. हाँ 74 थे. वर्टिकल पार्टीशनिंग. If we divide our table into two vertical in vertical partitioning, if we divide a table into two vertical portions, then efficiency of those applications will be reduced, which is used to access data from second vertical portion. तो कह रहे कि अगर हम लोग एक टेबल को वर्टिकली डिवाइड करते हैं दो हिस्सों के अंदर ना, तो efficiency of the those application will be reduced, which is used to तो किन वो कह रहा एप्लीकेशंस की एफिशिएंसी जो है वो मुतासिर होगी. which is used to जो यूज करती हैं किसको, access data from both vertical portions जो दोनों से इस्तेमाल करता है. access data from the first vertical portion second ये none. data from the both vertical portions तो ये उसके लिए जो है efficient then the efficiency of those application will be reduced. तो efficiency reduce हो जाएगी उस एप्लीकेशन के लिए जिसने दोनों को access करना था, दोनों पार्ट चाहिए थी जिसको. सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है बोथ, पहला यानी access data from both vertical partitions. Consider a table name employee having fields. employee name ये उसके attribute बता रहा. employee ID, age, salary. Which of the following is true if the following SQL statement tries to execute? Select start from employee. कहते हैं all के all employee को show करो where employee name is equal to Ali. Statement has a syntax error. The statement only displays the employee ID. The statement displays the entire field from the employee in which the employee name is Ali. तो इसका सी राइट ऑप्शन बनता है. लेकिन इसको 375 वाले को कंफर्म कर लेते हैं. डी तो इसको हो नहीं सकता. द स्टेटमेंट हैज सिंटैक्स एरर भी नहीं है, तो दो ऑप्शन ही रह जाते हैं फिर. SQL command is provided is select star from this statement retrieve all fields from the employee table where the employee name column equals Ali.
So the correct answer is C. The statement displays the entire field from the employee in which the name is Ali. C. ठीक है C लगा हुआ. अच्छा आगे 76. Which feature of the database provide conversion? Database का कौन सा feature provide करता है? Conversion from the inconsistent state of database to a consistent state, ensuring minimum data loss. एक इनकंसिस्टेंट स्टेट से कंसिस्टेंट स्टेट में अगर जाना है मिनिमम डाटा लॉस के साथ, तो वो कौन सा फीचर यूज करके हम कर सकते हैं? ये रिकवरी सर्विस, अथराइजेशन सर्विस, डाटा प्रोसेसिंग या यूजर एसेसिबल कैटलॉग. तो ये मेरे ख्याल से रिकवरी सर्विस पेज नंबर 47 वो कह रहा है, वहाँ पे ये दिया हुआ है. यहाँ पे चेक कर लेते हैं 47 पे. 47 recovery service. Recovery service means that in a case a database gets an inconsistent state में चला जाए database to get corrupted due to any invalid action of someone, the database management system should be able to recover itself to consistent state. If the database gets if database in a case database gets an inconsistent state to get corrupted due to invalid action of someone, the database management system should be able to recover itself as to a consistent state. अगर वो कहता है कि database inconsistent state में चलेगी तो वो इस काबिल है कि recover कर ले itself खुद को to a consistent state में, ensuring the data that the data loss during the recovery process of data remains minimum. So ये recovery services के अंदर आता है. Right option लगा हुआ है recovery services. अच्छा जी, बाकी भी हम देखें यूजर एक्सेस कैटलॉग क्या होता है, ना देखें छोड़ें पहले. हाँ आप नहीं पढ़ना तो आप वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं. अच्छा विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द व्यूज. व्यूज के मतलब कौन सी मालूमात ट्रू है? व्यूज ऑलवेज कंप्लीट. देख लेते हैं यहाँ पे व्यूज के बारे में. व्यूज पेज नंबर 280 मेरे ख्याल से. ये रे. व्यूज आर जनरली यूज्ड टू फोकस, सिंप्लीफाई एंड कस्टमाइज. तीन चीज काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और फोकस करते हैं. द परसेप्शन ईच यूजर हैज ऑफ द डेटाबेस. परसेप्शन का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के किस नजरिए से देख रहे हैं टेबल को, डेटाबेस को. व्यू कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. व्यूज कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी मैकेनिज्म. कौन? Views can be used as security mechanisms by allowing users to access data through views. Views can be used as a security mechanism by allowing users to access data through the view without granting the users permissions to directly access the underlying base tables of the view. To focus on a specific data. तो यहाँ पे हमने क्या बताया हुआ है? View is always a complete set of all the tables in database. नहीं, true पूछे क्या true है इसके बारे में. True about the views. View can be not be used for retrieving data. Rows can not be updated or deleted in the view. The results of using a view are not permanently stored in the database. To focus on a specific data, views allows users to focus on a specific data that interests them and on the specific task for which they are responsible. Necessary data that can be left out of the view. That also increase the security of the data because users or the users users can see only the data that is defined in the view and not the table in the underlying table. A database view displays one or more database records on the same page. A view can display some or all the database views. You have filters to determine which record they show. You can be stored to control the record order
and group to display records in the related sets. Views have other options such as total or subtotals. Most users interact with the database using the database view. A key to creating a useful database is a well-chosen set of views. Luckily, while views are powerful, they are also easy to create. A view is essentially a dynamically generated a view is essentially a dynamically generated result table that is put together based upon the parameters you have defined in your query. For example, you might instruct the database to give you a list of all the employees in the employees table with the salaries greater than 15,000 USD US dollar per year. The database would check of the employees table and return the requested list as a virtual table. Similarly, a view could be composed of the result of query on several tables all at once, sometimes called a join. Thus, you might create a view of all the employees that with a salary of greater than 50,000 from the several stores by com Cumulating the result from the queries to the employees and stores databases. The possibilities are limitless. You can customize all aspects of the view, including the name of the view, a field that appear in the view, the column title for each field in the view, order of the fields in the view, width of the column in the view, as well as the overall width of the view, the set of records that appear in the view, and filtering the order in which the records are displayed in the view, sorting and grouping कहते हैं इसे column total for column total for numeric and currency fields, total and subtotaling. The physical schema for a relational database describes how the relation in the conceptual schema are stored. The physical schema for a relational database describes how the relation in the conceptual schema are stored in terms of the file organizations and indices. Indexes use the conceptual schema is the collection of the schemas of the relations stored in the database. While some relations in the conceptual schema can also be exposed to applications such as be part of the external schema and the database additional relation in the external schema can be defined using the view mechanism. The view mechanism thus provides the support for logical data independence in the relational model. That is, it can be used to define relational relations in the external schema that mask changes in the conceptual schema of the database from the applications. For example, if the schema of a store relation is changed, we can define a view with the old schema and application that expect to see the old schema can now use this view are also applicable in the context of security. We can define views that give a group of users access to. For example, we can define a view that allows students to see other students' name and age but not in their GPA, and allows all students to access this view but not the underlying student table. There are two ways to create a new view in your database. You can create a new view from the scratch or make a copy of existing view and then modify it. ठीक हो गया आज तो the result of the using is also going to be set of all the tables in the view is always a complete set of all the tables in the database. No, you can not be used for retrieving data. हम करते हैं इसका use अलग दिखाओ ये अच्छा row can not be uploaded or deleted in the view कर सकते हैं हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं व्यू के अंदर और जो है ये जो है राइट ऑप्शन the result of using a view are permanently stored in the database. Which of the following is true about मैं क्या करूं which is true about मैं क्या करूं can be rolled back activates triggers in DML command resets identity of the table. जिसका जो है मेरे यहाँ से सही मार्क हुआ है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं
Research working on the research identify of the table. 78. Which of the following is correct way to find out the size of Cartesian product in case of cross join? रो को मल्टीप्लाई करेंगे, रो एक टेबल की रो नंबर ऑफ रोज को दूसरी टेबल की नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई, द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड टेबल. क्रॉस ज्वाइन यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ. क्रॉस ज्वाइन CROSS क्रॉस UIN ज्वाइन. The number of rows in the first table multiplied by the number of rows in the second table. 79. Suppose there are 8 rows and 4 columns in the table and 3 rows and 4 columns in the table. What is the size of the Cartesian product in the case of cross join between these two tables? 8 rows and or these 8 3 are 24. Which of the following is not one of the properties of the transaction? ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज इज नॉट नहीं है. ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज जो 4 है एसिड से ACID एसिड, ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और ए से डी से ड्यूरेबिलिटी. रिडंडेंसी जो है वो नहीं है. अच्छा 80. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट व्यूज? It is not possible to left out the data which is not required for a specific view. Displays one or more databases records on the same page. Incorrect पूछा है कि which of the following is incorrect about view? यार 280 पेज से ये हमने उठाए, 280 पेज पे जाकर देख लेते हैं. देखें, in addition to use data independent security, choosing a vertical and a horizontal subset of a table, a view using two tables, a view using function updates on view. यहाँ पे ये पूछा हुआ है which of the following is incorrect about view? It is not possible to left out a database view displays one or more database records on the same page. View can be used as a security mechanism. Views can be used as security mechanism. ये पढ़ा हो गया. Views are generally used to focus on the Views are generally used to focus the perception. Views are generally used to focus the perception. Views are generally used to focus the perception each user has of the database. तो incorrect यहाँ पे जो है वो ये है, it is not possible to left out the data. It is not possible to left out the data which is not required for a specific view. ये incorrect है. आगे 81. Each course selection is assigned a particular faculty member. Each course section is assigned a particular faculty member and each course section corresponds to a particular course. कि हर सेक्शन के पास एक particular कोड है, उसको एक faculty member असाइन की particular. Conceptually, what is the relationship between the faculty and the course, not course section? Faculty और course के दरमियान जो है वो क्या relation है? Many to many. कि many faculty members हो सकते हैं और many courses हो सकते हैं. Conceptual.
वो क्या इसके मुताबिक 1 to many, यानी एक फैकल्टी मेंबर के पास डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं। इन डिफरेंट कोर्सेज एक फैकल्टी मेंबर डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट कोर्सेज भी तो पढ़ा सकते हैं। यानी उसने कहा था डिफरेंट सेक्शन, तो यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक सी ऑप्शन कह रहे तो इसका बनता 1 to many, यानी बी ऑप्शन। Which of the following is used to add or drop column in the existing table? वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हमने कोई कॉलम ऐड करना है या डिलीट करना है या ड्रॉप करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नहीं करते, नहीं देन अल्टर स्टेटमेंट यूज करते हैं। जो भी कॉलम ऐड या ड्रॉप करने के लिए हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आगे which of the following is correct way of selecting all the columns from a table called persons? Select star from persons, B option सही रहेगा। आगे 84 which of the following is not a feature of indexes? Is indexed sequential files का फीचर नहीं है indexed sequential file, sequential S C E sequential sequential file। Organization records are arranged on the storage devices in some sequence based on the values of some field called sequence fields. Records are arranged, where records को arrange किए जाते हैं on device storage devices in some sequence based on the value of some fields called sequence field. Sequence field is often the key field that identifies the record. Simply indexes. By using a single index for a certain key field of the data record, indexes can be obviously built for each field that uniquely identifies a record or set of records within the field and whose type is amenable to ordering multiple indices, hence provide a high degree of flexibility for accessing the data view search on various attributes. This organization also allows the use of variable length records containing different fields. It should be noted that when multiple indices are used, the concept of sequentiality of the record within the file is useless. Each attribute field used to construct an index typically possesses an ordering of its own. For this very reason, it is typically not possible to use the sparse or spaced type of indices previously described. Two types of indices are usually found in relation: the executive type, which contains an entry for each record in the main file, and the other in the order given by the indices key; and the partial type, ex exhaustive type and partial type। partial type के अंदर which contains an entry for all the records, यहाँ पे लिखा था for each record in the contains entry for each record, यहाँ पे लिखा है contain entry for all the records, each record for all the record that contains the chosen key field or variable record। यहाँ पे हमारे पास जो था हम लोग ने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग पढ़ रहे हैं। 85 के अंदर फोर वाला देख रहे हैं, 264 उसने पेज नंबर बताया हुआ है यहाँ पे। 264 पेज नंबर चेक कर लेते हैं। 264 चलें
आगे 264 पे इंडेक्सेस ये लिखा हुआ इंडेक्सेस Yeah, following the silent feature of the indexes sequential file structure, records are stored in the sequence. Records are a silent feature. The records are stored in sequence, and index is maintained. Dense and non-dense types of indices are maintained. Track overflows and file overflows. Track overflows and file overflow areas are ensured. Cylinder index increases the efficiency. ठीक हो गया. Cylinder indexes increase the efficiency. Cylinder indexes increase the efficiency. ये true है. उसने false पूछी है. ये तो true हो गई. कहाँ गई? ये बोली. Take records are stored in the sequential and index. Records are stored in the index in the sequence. Records are stored in the sequence and index is maintained. Dense and non-dense types of indices are maintained. ये भी true है. Cylinders indexes increases the efficiency. Cylinder index increases the efficiency. भी ठीक है. Track overflow and of file overflow area cannot be ensured. Track overflows and file overflow areas are ensured. यहाँ पे क्या है not ensured तो ये false statement है. आगे 85 consider the given relations student and the instructor as given below. Please note that frame and L name also denote the first name and the last name respectively. Which of the following statement is correct with respect to the two relations given above? The two relations are not union compatible since the two relations are not union compatible since their attributes names differ. Number 152. Composite of relational operator. Union operator. We will now study the binary operations, which are also called as set operations. The first requirement for union operator is that the both the relations should be union compatible. It means that the relation must be meet the following two conditions. Both the relations should have the same degree, which means that the number of attributes in both relations should be actually same. Domain of the corresponding attributes in both the relation should be same. Corresponding attribute means first attribute of the both relations and then second and so on. If it is denoted by U if R and S are two relations which are union compatible. If we take union of these two relations, then the resulting relation would be the set of the tuples of either set of tuples either in R or S or both. Since it is set, so there are no duplicate tuples. The union operator is commutative, which means US is equal to SUR. For example, there are two relations, course and course one, denoting the two tables storing the courses being offered at different campuses of an institute. Now, if we want to know actually what courses are being offered at both campuses, then we will take the union of two tables, course 1 U course 2. So in the union of the above courses, there are no repeated tuples and they are union compatible as well. The two relations are non-union compatible since their attribute names differ. F name in. Please note that F name in the first name and the last name are so denotes the first name and last name respectively, which are the following. Consider the two relations student and registrator as given below. कहाँ दिए हुए हैं? Their relations are non-union compatible. Their relations are non-union compatible since their attribute name differ. It is which of the following serve as a milestone or reference point in the log file. Log file के milestone या reference point किस हिसाब है? Which dash serve as a milestone or reference point in the log file?
checkpoints. Check. Checkpoint. Checkpoint is also a record or any entry in the log file. Check record is also entry or checkpoint is also a record or any entry in the log file. Checkpoint you can record a entry in the log file के अंदर it serves as a milestone or reference point in the log file. At certain point in time the database management system enters log entry or record in the log file and also perform certain operations listed below. It moves and modified the database buffer. It moves modify the database buffer. To disk, all log records from buffer to disk. Write a checkpoint record to log. Write a checkpoint record to log. Log record mentions all active transactions at the time. Now, in case of crash, the RM monitor the log file to the last checkpoint. The checkpoint guarantees that any prior commit has been reflected in the database. RM has to decide which transactions to window and which to ignore, and RM decides it on the following basis: transactions ended before the checkpoint and ignored altogether. Transactions which have to both begin and the commit entries are written. It does not matter if they are committed again. Transactions that begin and abort entry are ignored. Transactions that have begin and no and entry commit or rollback are ignored. This was This way checkpoint makes the recovery procedure efficient. We can summarize the deferred approach as writes are deferred until commit for transaction is found. For every purpose log file is maintained. Log file helps to reduce the actions that may be lost due to system crash. Log file also contains the checkpoint log. Next we are going to discuss the other approaches of crash recovery, and that is incremental log with immediate updates. Which of the following serve as a milestone reference point in the log file? Checkpoints. अच्छा question number 87. Which of the following are the general activities which are performed during the development of application programs? All data browser based forms are displayed in the following tools except HTML scripting language for web based form. HTML scripting developed in the following tools except डेवलप नहीं किए जाते ये तो वो है इसका जो है वेब बेस फॉर्म्स हैं बाकी तीनों टूल्स में की जाते हैं HTML में भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और फ्रंट पेज में भी जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क का फॉर्म कौन सा नहीं है जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क तो ये कह रहा है EEPROM 57 पे देखते हैं यहाँ पे 257 which is not a form of optical disc. CD-ROM ROM or CD-ROM erasable optical.
CD-ROM, WOM, erasable optical. Is not a form of optical disc. Optical disc. Optical disc record data by burning microscopic holes in the surface of the disc with a laser to read the disc. Another laser beam shines on the disc and reads the holes by changing in the reflection pattern. Optical discs come in the three basic forms: CD-ROM, WOM, erasable optical EO. Erasable optical तीन है, CD-ROM, WOM और erasable और EO ये नहीं है. 90 in which of the following situation clustering is suitable? Static, relatively static के अंदर ये जो है वो suitable होती है. आगे 91 में only one type of constraint can be enforced in any table by create command. False. ये 205p इसने रेफरेंस दिया वो चेक कर लेते हैं. नहीं यहाँ पे चेक होगा 205. देखिए यहाँ पे लिखा है in this way different types of constraint can be enforced in any table by create command. ठीक ये लाइन लिखी हुई है ये तो इसका ये फॉल्स है कि एक ही डाल सकते हैं कंस्ट्रेंट की क्रिएट कमांड के जरिए किसी भी टेबल में. अच्छा which of the following is 92 which of the following is a disadvantage of the chaining technique. Which of the following is disadvantage of chaining technique to handle the collision. डिसएडवांटेज इनमें से कौन सा है इसका चेनिंग टेक्निक का. 269 पे उसने क्या मार्क किए हुए हैं. 269 पेज नंबर 269 ये आ गया ये collision handling. A well chosen hash function can avoid anomalies. A well chosen hash function can avoid anomalies which are result of an excessive number of collisions but does not eliminate collisions. We need some methods for handling collisions when they occur. We will consider the following techniques. Open addressing chaining. हमने चेनिंग देखनी है. चेनिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एडवांटेज इसका क्या है और डिसएडवांटेज क्या है चेनिंग का. समरी हैश टेबल ऑर्गेनाइजेशन की. चेनिंग इसके एडवांटेजेस की अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन्स. डिसएडवांटेज ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक लिस्ट. इसका डिसएडवांटेज ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक लिस्ट. अच्छा आगे consider the following relation R and its sample data. Consider that these are the only tuples for the given relation. Which of the following statement is not correct? Consider the following relation R and its simple data. Consider the following relation R and its simple data. Which of the following statement is not correct? The functional dependency employ dependency employ number over project number determines the department number and hold over R.
93. As entity type is a coherent set of similar objects that we want to store data on. Construct in ER model. ER model supports the following major construct: entity, attribute, and relationship. ER model support the following. ER model support following major construct: entity, attribute, and relationship. We are going to discuss each one of them in detail. Entity is the basic building block of the ER model. Entity is a basic building block. The entity is the basic building block of the data model. Basic building block of the data model. The term entity is used in three different meaning of for three different terms that are entity type, entity instance, entity set. In this course, we will be using the precise term most of the time. However, after knowing the meaning of these three terms, it will not be difficult to judge from the context which particular meaning the term entity is being used in. entity type the entity type can be उसने क्या बात की है यहाँ पे entity type की बात की है entity type can be defined as a name or label assigned to item or objects that exist in an environment. किसी भी ऑब्जेक्ट या आइटम को जो नेम या लेबल देते हैं वो उसका एंटिटी टाइप होता है that exist in an environment and that have similar properties. It could be person, place, event, or even concept. That is an entity type can be defined for a physical as well. That is an entity type can be defined for a physical as well as non-physical things. Entity type is distinguishable from the other entity types on the basis of properties, and the same thing provide the basis for the identification of entity type. We analyze the things existing in any environment or place. We can identify or associate certain properties with each of the existing in that environment. Now, the thing that have common or similar properties are candidates of belonging to same group. If we assign a name to the group, that then we say that we have identified an entity type. Generally, the entity type and their distinguishing properties are established by the nature by very existence of the things. For example, a bulb is an electric accessory, a cricket ball bat is a sport item, a computer is an electronic device, a shirt is a clothing item. So, identification of entity type is guided by every nature of the thing, and then item having properties associated with an entity type are also considered to be belonging to that entity type or an instance of that entity type. However, many types entity type is defined when the database is actually constructed specific types such as integer, text, or logical, defined by the database designer, coherent or set of similar objects that we want to store data on. Entity type is a coherent set of similar objects that we want to store data on. 94. An entity type can be logically connected to another entity. An entity type
जी टाइप को पता चला गया होगा, इसके ये ऑप्शन बनता है। 94 एंटिटी कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर बाय डिफाइनिंग अ कॉमन एट्रीब्यूट। लॉजिकली कनेक्टेड कॉमन एट्रीब्यूट के जरिए करते हैं हम लोग। 94 95 you cannot modify more than one table at a time through a view. True. 96 which of the following is one of the purpose of using DML command? Create database, destroying database. ये तो DDL की command है। Inserting data in data tables. 20 ये right option है इसका। Purpose of using DML is inserting data in the tables. Rows. 97 what is the alternative name of the data dictionary? Data dictionary की दूसरा नाम क्या है? Data dictionary की दूसरा नाम है metadata, data indexes या system catalog। डाटा डिक्शनरी के दूसरे नाम ज्यादा मुझे पता हुआ है डाटा डिक्शनरी या डाटा हम देखते हैं डाटा डिक्शनरी डाटा डिक्शनरी पेज नंबर 64 ये डाटा डिक्शनरी contains metadata about it is used to specify database schema as a set of definitions expressed in the DDL. The DDL statement are compiled resulting in a set of tables stored in a special file called data dictionary or data directory. Data dictionary contains the metadata. Definition of each attribute means the purpose or objective of the attribute, normally stored in some form of data dictionary or a case tool or a case tool or maybe on paper. Descriptions of data uses or how and by whom data will be used, requirements for response time, data security, backups tool to be used. Database design is stored in the data schema which is stored in the data dictionary. Okay. 98 in function helps reduce the need of the use multiple and conditions. तो ये true है। जो in हमारे पास function है वो reduce करता है multiple and conditions का इस्तेमाल। false यानी कि multiple and का नहीं और करता है वो in function। यहाँ पे देखते हैं in in function multiple or का use in has reduced the need of to use multiple or condition. It is used to check in a list of values. The syntax of the in function is select column from table where column 1 is SQL statement return the records where column 1 is value 1, value 2 or value in the in function can be used in many valid SQL statements. Select insert update or delete. We will now see an example of an in operator. सही हो गया ये false है ये एंड को नहीं एंड कंडीशन के लिए नहीं इस्तेमाल होता ये और कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग 99 if the following is not true about denormalization it is the process of attempting to optimize the performance of a database ये true है it enhances the performance of a database in denormalization it is required to add redundant data वो कह रहा है कि फास्ट स्टेटमेंट को मार्क करो डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर नॉर्मल फॉर्म्स ये गलत है हम लोग हायर से नॉर्मल की तरफ आते हैं डिनॉर्मलाइजेशन 187 ये देखिए डिनॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर नॉर्मल फॉर्म्स हायर से लोअर की तरफ यहाँ पे हायर लोअर की जगह पे लोअर टू हायर लिखा हुआ है यानी ये उल्टा है
ये गलत है, बाकी सही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस। It is the process of attempting to optimize the performance of a database. It enhances the performance of database. It enhances the performance of the database. It denormalizes the in denormalization. It is required to add an in denormalization it is required to add redundant data. और आगे 100 MCQs which of the following gives all the fields from the employee table which of the following gives all the fields from the employee table name as employee, select star from employee, पहला ऑप्शन ये हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई।